इवन दो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि आपको वो खुशी मिले अपने काम से, जो करके आपको एक सेटिस्फैक्शन फील हो, एंड समहाउ आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड दैट. So, सबसे पहले, before I came into training and consulting, I was in IT, and I have worked with amazing MNCs before this for about 4 to 5 years. But all this while, I knew that इवन दो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि आपको वो खुशी मिले अपने काम से, जो करके आपको एक सेटिस्फैक्शन फील हो, एंड समहाउ आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड दैट. मेरा जो भी टैलेंट था, इंटरेस्ट था, कहीं ना कहीं आई वांटेड माय प्रोफेशन टू बी इन लाइन विद दैट, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड, जब आपका मन किसी चीज में लगता है, जब आप उसमें नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, तो वो चीज आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं. So that's where I found my interest in people development, in personality enhancement, in soft skills and behavioral skills more than anything else. So peak performance is a state where one can perform to the maximum of their ability, characterized by confidence, effortlessness, and total concentration on the task. We agree? Now, it's also a state where you deliver the results, feeling in the flow, where you're actually involved in the whole process and giving the best that you can. While there are challenges, do pay attention to this. While there are challenges, you're still able to overcome them and feel that life and work are excellent. So it is not just that you're constantly working and working and working and doing your best at it. However, you are also living your life to the best efficiency. Now, my next question is, we're going to do these two things where you're performing at the peak and giving absolute high productivity. So tell me, what is high productivity? High productivity is never an accident. Do remember that. It is always the result of commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. And today, that's exactly what we're going to talk about, that how will you produce excellence in everything that you do? How will you plan your work? And I do believe that you've also done a lot of sessions which tell you how, in which experts told you how do you plan, how do you prepare, how do you organize everything that you want to do, and how do you focus your effort on something. Now, increased productivity. Everybody, increased productivity means greater output from the same amount of input. Now, isn't that amazing? So you thought that if I want more productivity, you'll have to increase your efforts and work more. However, we are talking about high productivity, which means that you get the same, that you get greater output from the same amount of input. Isn't that amazing? Now, if I ask you that your commitment to excellence is important, but what is exactly excellence? So, firstly, it is an art won by training and habituation. And Bizgurukul, your platform, has been amazing for all these trainings, where you are getting this opportunity to learn from so many different experts in so many different fields. And trust me, not everybody gets all of this. And you get this chance, so I request you to make the most of this. We do not act rightly because we have the virtue or excellence, but we rather have those, that is, this excellence, because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. Now, when all of this effort that you put in eventually becomes your habit, that's when you realize you deliver consistent results. These 5 Ds. सबसे पहले, अगर आपके सामने कोई टास्क है, पहले तो प्लीज डू इट. द फर्स्ट सजेशन इज कि जब आपके सामने कोई भी चीज है, आपको लगती है कि वो आज ही कर सकते हो, ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, तो प्लीज आप उसको अभी के अभी कर दीजिए. Now let's say आपको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा बड़ा काम है, I don't think I can complete this today, तो आप उसको छोड़ दोगे? नहीं, इंस्टेड आप उसको डिवाइड करोगे.
What you're going to do is maybe divide it into 4 different parts, 5 different parts, 3 different parts, whatever it is that you want. बड़ा काम है, उसको break down करो, dissect करो, divide करो, maybe आज थोड़ा करो, कल थोड़ा करो, या weekend पे थोड़ा करो, but karo. This will still move your to-do list ahead. You will still have points to check, and you will still have a little load off your head. You still will have some stress going away. आपका काम फिर भी हुए जा रहा है. तो अगर आपको वार्डरोब बनाना है तो थोड़ा सेक्शन आज करो, थोड़ा सेक्शन वो करो. उसके बाद आपको कोई ट्रेनिंग में से कुछ समझना है, आप उसका रिकॉर्डिंग देख रहे हो, कुछ और सीख रहे हो, अपने काम का कोई पार्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा काम है, थोड़ा आज कर लो, थोड़ा कल कर लो, थोड़ा परसों कर लो, बट करो. दैट इज इम्पोर्टेंट. ना अगर उससे भी नहीं होता है, आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मान लो आपने 10 चीजें करनी है, उसमें से 8 इंपॉर्टेंट है, सो नाउ दिस इज अ चैलेंज फॉर यू. इन दैट केस उनमें से जो बाकी 2-3 चीजें हैं जो आप बाद में भी करोगे तो चलेगा. इन दैट केस यू कैन डेफर इट फॉर टाइम बीइंग. मे बी आज 2-3 दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर सकते हो, या इस वीकेंड के बाद कर सकते हो. फिलहाल उसको अपने टू डू लिस्ट में मत रखो, बट मेन टू डू लिस्ट में रखो. यू कैन डेफर इट फॉर नाउ. एंड फाइनली, अगर तब भी आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, मे बी दिस इज नॉट योर स्ट्रेंथ, मे बी दिस इज नॉट योर स्टाइल, मे बी you don't have time for it, maybe this is not your core competency, and you still want to do it, now this is your chance to delegate it to someone who is much more suitable for it. कोई और है जो ये बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई और है जिसको ये करने आता है, जिसके लिए बहुत इजी है, या फिर आपका अगर टाइम बचता है और अगर सामने वाला इज मोर देन हैप्पी टू डू इट फॉर यू, कि उसको ये करने में कोई परेशानी नहीं है. ऐसे नहीं कि आप अपना काम किसी और के ऊपर डालो. नाउ दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. अगर कोई और नहीं करना चाहता, आप उसको प्रेशराइज कर रहे कि नहीं पहले मुझे ही करके दे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. However, if the other person is ready to help you, then if you delegate it, you are going to add more hours to your 24 hours. This, मान लो, is a 3-hour job and you give it to somebody else. Now you have those 3 hours to do something else. And finally, if you think all of these things cannot be done, and if it is something that you can drop, if it is not that important, delete it. Because ये जितना टाइम आपके टू डू लिस्ट में, जितना टाइम आपके दिमाग में रहेगी, ये चीजें आपको परेशान करती रहेगी कि ये अब तक नहीं हो रहा, अब तक नहीं हो रहा, अब तक नहीं हो रहा. इस चक्कर में आपके बाकी सारे काम अफेक्ट होंगे. And then finally, if you cannot do anything, like I said, cannot do any of these other 4, please delete it. Please let it.